नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमीतजैन और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है मेरे लिए, क्योंकि आज खुद मेजर जनरल जी.डी. बख्शी जी ने टाइम दिया है हमारे साथ। सर, जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद। सर, एक क्वेश्चन है जो बहुत लोग पूछते हैं, बार बार पूछते हैं कि व्हाई इज इट दैट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान नोबडी स्पीक्स। बेशक माइनॉरिटीज़ के ऊपर एट्रोसिटीज़ हैं या उन्होंने तालिबान के साथ मिलकर जैसे इतने इतने सालों से बेवकूफ़ बनाया सारी दुनिया को, नोबडी स्पीक्स। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, हमने सीए इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी तो होल वर्ल्ड स्टार्ट्स लेक्चरिंग अस। Why is it for them nobody speaks when it comes to minorities or these kind of sensitive issues? But for India, we are lectured by everybody in the world. We have to look a little deeper. There is Samuel Huntington की thesis थी Clash of Civilizations, जो कि 1990s में शुरू हुई थी. So पहले तो they were talking of the threat from the Islamic civilization, but अब वो जो है वो threat का ज़्यादा change हो गया है towards Russian, Greek Orthodox civilization, Chinese civilization, Indian civilization. They are finding these are the emerging civilizations, emerging challenges and threats. And already you find that they have started, an anti-India campaign. आपकी American universities, खासकर Harvard, professors like Sheldon Pollock and a whole set of these people spreading atrocity literature of the Afro-Dalits, about the way minorities are treated in India, trying to describe the Hindu religion as toxic, as misogynist, as casteist, as racist. So there is a very well orchestrated thing in which, like I said, a number of the American universities are involved, primarily Harvard, led by Sheldon Pollock, Professor Sheldon Pollock, and then there are a number of NGOs like those led by George Soares, and there is another Iranian gentleman now who's funding a lot of money into India for these kind of anti-Modi propaganda purposes. The simple fact is, if you see it in overall terms, the Hindu majority, the dominant demographic, कभी उसे अलाउ नहीं किया गया कि वो उभर कर आए एक डेमोक्रेसी में. बेसिकली इट इज अ गेम ऑफ नंबर्स. सो अगर आप लॉजिकली सोचें, सो द हिंदू शुड हैव बीन हैविंग देयर गवर्नमेंट्स राइट थ्रू. बट द सिंपल फैक्ट इज दैट व्हेन वी गॉट independence, under the name, we had a Marxist, leftist liberal lobby which took charge, especially of our education system. And under the guise of trying to keep India secular, their strategy was to splinter the Hindu vote into multiple castes and jatis and communities and all that. And they were, Professor Romila Thapad and the others were even claiming there is no Hindu religion. There's just a conglomeration of jats and jatis and castes and so many different varnas, etc., etc. So the fact of the matter is that this is the exact technique that was used by the British Empire, by the colonial administration to divide and rule, to splinter India. And there was this Sir Herbert Hope Risley, who was the first caste commissioner of India, census commissioner of India, and he had started, the system of caste-based censuses. And he had said there are some 2,700 castes and jatis in India, and so many tribes, etc. And then he started a series of caste-based censuses to enforce these ram these down the throats of the Indian people. And they had to be coached to say by the people conducting the census, "Bhai, ye bolo, tum ye ho, tum ye ho, tum ye ho." So they created this when actually caste was dying out because we were industrializing, because we were urbanizing. Caste is basically a rural phenomenon, And as India industrializes, as India modernizes, urbanizes, in a metro you can't ask somebody his caste. That is nonsense. You'll get slapped, and you should. You see. So the fact of the matter is that caste was dying out.
But I am very sorry to state that our post-independence generation of politicians proved to be rather pygmy politicians who focused the hardest on caste as the sole mobilization factor. That's true. And then you find the turn taking place in India somewhere in the 80s, when you remember we had the Ramayana serial, and then we had the It was like a curfew on the roads. Mahabharat serial, curfew on the roads. Great, the epics really revived that idea of Hinduism, idea of India, kind of a thing. And then that is what the BJP, Jansangh, they started trying to consolidate the Hindu vote politically. Political consolidation of the Hindus. And then to fight this, you had VP Singh launching the Mandal agitation, bringing in the OBCs, adding more to the caste, chaos than was there earlier. But then onwards, you find that the dominant demographic seems to have asserted itself. And slowly you found that the Ram Janmabhoomi movement, the Hindu demographic, the Hindu polity started consolidating itself, and we had, Vajpayee ji won the first election, then they lost the second, then again. But now, from 2014 onwards, this Hindu consolidation is complete. Now, this Hindu consolidation of the dominant demographic, you must इसको समझना जरूरी है. Dominant demographic जो भारत में है वो हिंदूज हैं, और by any law of democracy, it is they who should have been forming the governments from the very beginning. Yes. But in a very methodical way, they were split into castes and creeds, and वो तो OBC, other backward class, scheduled caste, scheduled tribe, ये वो they splintered thoroughly the Hindu majority vote, and thereby giving giving a say beyond their numbers to the minorities, much beyond their actual demographic weight. Yeah. They started playing it up, and it became a situation where the minority wags the dog. Yes. कुत्ता तुमको नहीं हिला रहा, तुम कुत्ते को हिला रही है, ये है. अब this has a whole lot of share, because this has serious implications at the global level. For the very simple thing that when Modi ji took over in 2014, the Indian economy was around 10th in terms of GDP. Today, it is the 5th largest economy in terms of GDP, and it's a $3 trillion economy. And the prognostication is that in the next 2 to 3 years, we will be the 3rd largest economy in the world with a $5 trillion economy. And as you were discussing, the Indian economy is self-sustaining, is indigenous. Yeah. It depends upon internal consumption and not so much on export. Like China is an export or perish. You see, but the Indian economy is all internally driven. And now we have started creating a pilgrimage-oriented economy. It's you improved infrastructure in a major way, and roads, airports, railways, and then you are trying to create. You see, when India became independent, the only tourism circuit was Red Fort, Taj Mahal, Fatehpur Sikri. That means all that you had to show was your Mughal heritage. Yeah. Now the Mughals are Uzbeks, please, for God's sake, they are not Indians. They are not Indians. वो कोई हिंदुस्तानी थोड़ी ना है साहब. लेकिन उनका जो आपने बना दिया, बड़ा हो हल्ला हो गया कि हम तो secular है. So what you were trying to say is that between the Mughal Empire and the British Empire, there was no Hindu intergenum. Yeah. Which is historically nonsense. And before that also. Before that, कोई Hindu history थी ही नहीं साहब. Your entire history is divided into 3 parts. Ancient history, medieval history, modern history. Ancient Indian history actually starts from 9500 BCE, because that 9500 BP rather, because that is the radiocarbon dating of Birhana, Rakhigiri, Dholavira on the Saraswati civilization. But in the civilization, that's not in your history books at all. No. So 10,000 years almost of Hindu history is one part.
300 years of Mughal history is This thing. thicker part, and even thicker part is that 200 bloody years of the British colonial rule, you know. And don't forget that before the British colonized us, 25% of the global economy, more or less, was being generated by India, 25% by China, you see, and they brought it down to 1 to 2%. Yeah. Then the British started creating a whole lot of man-made famines. There were total 7 famines man-made in India. So to cut a long story short, from that to the 5th largest economy, to the 3rd largest economy, then today India is a nuclear power. Today India is a space power. It can send satellites, not only its own, it is launching satellites of European countries and other countries in the world. Even the Americans find it much cheaper to launch their satellites here than to do it themselves. Then we are a military power of consequence. 2nd largest army, 4th largest air force, 5th largest navy in the world, and likely to grow even stronger. Yeah. So now in the West, you are being treated as a threat. There was when Donald Trump was in charge, he was very clear that his main enemy was China. Yeah. And therefore, if he had to deal with the Chinese, he had to have India on his side. And that is why he went in to strengthen Quad, India, Japan, Australia, United States, as a means of counterbalancing the power of a rising and aggressive China. Right? But then we are finding slight changes in the Biden administration. They have reduced the American, America should have been pivoting to Asia. If China is your biggest threat, then logically they should have been pivoting to Asia. But on the contrary, we found that he wound up the Afghan war in a tearing hurry, and he went for Ukraine, involved Russia, Ukraine in a major war. They thought they would torpedo the Russian economy, but nothing has happened to the Russian economy. The hit has been taken more by the European economies. Yeah. On the contrary. So that has started, and therefore there is a feeling in some portions of the American government circles, some portions of the academia, the CIA, the NGOs like those led by George Soros, that India is an emerging threat, and therefore you find lots of activities, surreptitious activities already on to, as what Rajiv Malhotra called, breaking India. Breaking India forces are on the march. They are trying to cut India down to size, trying to, create atrocity literature of the Afro-Dalits to create a North-South divide, which had been created by Bishop Caldwell in the British era. But वो जो है, वो नॉर्थ साउथ जो हमारी डिवीजन है, उसको बहुत बढ़ाना चाहते हैं. एफ्रो दलित लिटरेचर करके वो एक इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय जो वाइट्स हैं इंडिया के, वो जो ब्लैक्स हैं इंडिया के, दलित्स और ट्राइबल्स, उनको सप्रेस कर रहे हैं, उनको रेसिस्ट एटीट्यूड्स अडॉप्ट कर रहे हैं. ये बड़ा लिटरेचर आ रहा है, बहुत. तो सरप्राइजिंग कि हमको कोई सुध नहीं, भाव नहीं. और अब तो साहब हिंदूफोबिया खुलकर आना शुरू हो गया है. पहले इस्लामोफोबिया की बात, अब हम इस्लामोफोबिया की बात सुन रहे हैं. वेस्ट में जो लड़ रहे थे उनको इतना मारा, इतना उनके साथ कत्लो गारत किया, अब सडनली वो साहब उनके बड़े सक्के हो गए हैं. और हिंदू फोबिया जो है एक शुरू हो गया है. हमारे टेम्पल्स पे अटैक हो रहे हैं, लोगों पे अटैक हो रहे हैं. कितने सारे इंडियन मारे गए, स्टूडेंट 9 से ज्यादा तो इसी स्टाल के शुरू से मारे गए. एंड देयर इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग व्हिच वी विल हैव टू बी कॉग्निजेंट अबाउट. सर, जैसे आपने बोला अभी कि the reason is that India is rising. So they are creating all these narratives against Bharat, against Modi ji, so that we are looked down or maybe pressurized to get their way out. But do you think that even the interference in the elections is also going to happen? The way now you see a lot of things happening here, both from America also, China is also funding in a big way. You see, with artificial intelligence, algorithms and all coming into the social media, quite obviously, I mean, when the Americans
elections they are claiming have been influenced by the Russians. Yeah. So here we have the Chinese, we have the Americans, we have the Europeans. There are a whole lot of these people who are very actively on the social media, and who are could be carrying out lots of lots of campaigns which are very, very subtle, which are very segmented. They segment the audience into niche groups and target them in a very segmented manner. I wouldn't be surprised if the Chinese are already doing it. I wouldn't be surprised if other intelligence agencies are doing it, because they all have now a stake in what kind of India emerges. Yeah. What they are disturbed about is that India has emerged to be a very, very forthrightly committed to its own national interests. पहले तो साहब we were more looking after the interests of the United States कि भाई America is fighting in Afghanistan, Pakistan is helping Afghanistan, so though Pakistan is creating mayhem in India, कुछ नहीं कर सकते हम पाकिस्तान के खिलाफ क्योंकि अमेरिका नाराज हो जाएगा। और आपने देखा 26/11 हुआ, कख नहीं किया यहाँ से हमने वापस जवाब में। सर रोए हम लोग, रोए वहाँ पे, मतलब 167 Indians and other some foreign citizens got killed and there was no response. Yeah. कि भाई अमेरिका नाराज हो जाएगा। But now we find that with the Modi government they have been quite forthright. नाराज होए तो होए साहब, हमारे इंटरेस्ट ये है। We will not stop buying oil from Russia. अब हमको बोल रहे हो to stop buying oil and gas from Russia और खुद खरीदे जा रहे हो। You know, so all that hypocrisy I think has been very well taken care of. Our foreign minister Jai Shankar, he is doing a good job, and Modi ji has been very assertive. We have the NSA and all who are looking after giving primacy to Indian interest. That is what is of concern to people outside. Sir, it's your last question. I know you're also not feeling well, so I'll just keep it short, even though I've made it very long already. जो चाइना है, हमें मालूम है कि हमेशा ही किसी और के कंधे को यूज करके वो दूसरे कंट्रीज को डिस्टर्ब करता है। बिल्कुल। और हमने पहले भी देखा ये कुछ होता हुआ। डू यू फील दैट अभी जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं, लास्ट टाइम आल्सो वी सॉ दैट देयर वाज सम स्ट्राइक्स ऑन इंडियन फोर्सेस जस्ट बिफोर द इलेक्शंस। यू फोरसी अगेन चाइना इज गोइंग टू यूज पाकिस्तान बिकॉज़ दे आर ऑलरेडी प्रेस्ड डाउन, यू कैन गेट एनीथिंग डन फ्रॉम दिस मिशनरी काइंड ऑफ अ कंट्री, समथिंग यू कैन सी कमिंग अप ड्यूरिंग द इलेक्शंस दिस टाइम आल्सो? What we are already seeing, जो प्रत्यक्ष प्रमाण जो सामने हो रहा है साहब, आप देखिए उसने मालदीव्स में क्या किया। Look at the way he has installed a very hostile government in the Maldives, which is asking the Indian armed forces जो थे वहाँ, उन्हीं के लोगों की सेवा कर रहे थे, उनके लोगों को, जो मरीजों को इवैक्यूएट कर रहे थे, स्टॉर्म में निकाल रहे थे, उनको आदेश दे दिया कि साहब इनको दफा करो। वहाँ पे टेररिज्म फैल रही है। You know, Islamic radicalism is on the rise. Yeah. You see, and Maldives is a country which is dependent on tourism. Yeah. The entire economy is based on tourism. So Maldives will have to be very, very careful whether they want tourism or terrorism. You see, and now they are trying to sign military agreements with the Chinese. So there was one country which was so close to us. It has been taken over by China. They are trying the same bloody thing in Nepal. They have brought the Congress के साथ जो था उनका कोएलिशन, उसको डिसरप्ट तोड़ ताड़ के वो फिर सारे कम्युनिस्ट इकट्ठे कर रहे हैं। वहाँ भी उनकी दबदबा होगा कम्युनिस्टों का और चीन का। बांग्लादेश में इन रोड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। म्यांमार के बुरे हाल है, हमारी तो न्यूज में कभी आता ही नहीं, लेकिन म्यांमार में तो सिविल वॉर चल रही है साहब। और यहाँ तक अंदेशा लोगों को है कि जो तातमादाओ जो उनकी फौज है अब वो शायद होल्ड ना कर पाए। इतना ज्यादा गदर वहां पे हो रहा है जो कि उसमें आप समझते हैं चीनियों का हाथ नहीं है। श्रीलंका का क्या हाल किया है चीन ने, वो दुनिया ने देखा है और वो तो सबक सीख गए बेचारे श्रीलंका वाले अपनी इकोनॉमी को आउटसोर्स करने को चाइना को। अब अगली बारी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाही के कगार पे है, फटीचर मुल्क बन गया है। दो रोजी रोटी कहाँ से आएगी ये समझ नहीं आ रहा। बलूच और सिंधी तो पहले ही विद्रोह में थे, गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग विद्रोह में हैं और अब तो उनकी पश्तूनों के साथ टक्कर चल रही है। ठीक है, तो ये खतरा काफी उनके लिए भी है। लेकिन चीन मैंने देखा है कि आगे की सोचता है।
वो जो है हम लोग बड़े जल्दी निश्चिंत हो जाते हैं कि सब ठीक है, बड़ा अच्छा है, एवरीथिंग इज क्वाइट, एवरीथिंग इज सेफ, एवरीथिंग इज नॉट सेफ। यस सर, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं जैसे सोशल मीडिया है, अभी मैं भारत में हूँ, आज मेरी फ्लाइट है, वापस जा रहा हूँ मैंने एक चीज़ नोट करी है कि यहाँ पर बार बार एक चीज़ बोली जाती है, चाइना डूब गया, चाइना टुकड़े होने वाले हैं, चाइना की इकोनॉमी वीक है, हमें एक्साइज चेन प्लेट पे रख के उसने वापस कर देना है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अरे साहब, ये भी बोला जा रहा है कि प्लेट पे रख के हमको मिल जाएगा पीओके, इस प्लेट पे रख जाएगा अक्साई चीन। माफ कीजिए, मेरे हिसाब से आपको मिल सकता है, लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा कि ना, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणी न मनोरथे, कि आप साहब बोले कि मेरे मुंह में मैं मुंह खोल के बैठ जाऊंगा, वो पीओके ऐसे आ जाएगा, वहां से अक्साई चीन आ जाएगा। दैट्स नॉट हैपनिंग। इफ यू वांट इट, यू विल हैव टू फाइट फॉर इट. You'll have to first want it bad enough, and then you'll have to be ready to fight for it. कि वो खुद चल के आ जाएंगे लोग, ये हाइपोथेटिकल है सर, ये नॉट ओनली हाइपोथेटिकल, विशफुल थिंकिंग। विजुअल भी बहुत छोटा वर्ड है इसके लिए। सो दिस इज वेयर आई कम टू, एंड व्हाट आई वांटेड टू मेक एवरीबॉडी अंडरस्टैंड वाज, बिकॉज इनसे ज्यादा बेटर इस चीज को कोई समझा नहीं सकता कि जो बार बार टीवी के ऊपर आता है, ये भी एक नैरेटिव है, पैसे लेकर ये नैरेटिव्स दिए जाते हैं। और भाई चाइना डूब रहा है, चाइना के टुकड़े होने वाले हैं, हमारा अक्साई चेन हमारे पास आने वाला है, हसीता नंबर 1 बनने वाले हैं। ऐसा नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। What I would like to state is कि it's nice to be optimistic, but it is even more important to be realistic. Very good. And plan in a realistic fashion. Yes, India is in a strong position, but it's not that the others are sitting still. That's right. जो मालदीव्स में हो रहा है, जो नेपाल में हो रहा है, म्यांमार में हो रहा है, ये अच्छे शुभ संकेत नहीं है। इसका मतलब हमको ज्यादा बहुत निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए। वी हैव टू बी ऑन आवर गार्ड 24/7, क्योंकि बहुत कुछ हॉस्टाइल एक्टिविटी हो रही है। और चाइना की आदत है कि ये दूसरों को मोहरा बनाकर आगे करता है, खुद नहीं लड़ता। यस सर, ठीक है। इसने जो है पाकिस्तान का एंटायर न्यूक्लियर प्रोग्राम मेड इन चाइना स्टैंप लगी हुई है ऑल ओवर। न्यूक्लियर डिजाइन चीन ने दिया, ठीक है साहब। पहले 4 बॉम्ब्स का जो यूरेनियम था वो चीन ने दिया, ठीक है। उसके पश्चात जो पहला पाकिस्तानी न्यूक्लियर टेस्ट था वो लॉपन और शिंजियांग में हुआ था। M9 M11 मिसाइल्स दिए, और जब अमेरिका ने सैंक्शन लगानी शुरू करी, तब जो है चीन ने पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया की तरफ मोड़ दिया कि तुम इनको बॉम्ब के डिजाइन दो और वहां से तुम नोदोंग टाइपोदोंग लॉन्ग रेंज मिसाइल ले लो। तो जिस तरह नुकसान इसने हमारा किया है पाकिस्तान के जरिए, वो तो मतलब पिछले कोई हमारे 80,000 नागरिक पाकिस्तान की टेररिज्म में शहीद हो गए हैं। और हमारी पिछली सरकारें थी कि वो कुछ करने को तैयार नहीं। थैंक गॉड इस सरकार ने कुछ तो किया। हमने उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक करी, फिर हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी, तो थोड़ी वहां ठंडक कलेजे में पड़ी। अब फिर मुझे लगता है कि चीन उसको उकसाएगा, अब उसकी धुम मरोड़ेगा, क्योंकि अब वो तो डूब रहे और वो कुछ भी करने को तैयार है। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, जैसे उनका रवैया आ गया है। तो देखा जाए तो द ग्लास इज हाफ फुल, द ग्लास इज हाफ एम्प्टी। इट इज गुड टू बी ऑप्टिमिस्टिक, इट इज इवन बेटर टू बी रियलिस्टिक। देखिए दोस्तों, ये कितना बढ़िया पॉइंट है, लेकिन मैं इसको सम अप करता हूँ। सर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि चाइनीज बहुत लंबी सोचकर चलते हैं। इसका उदाहरण है ग्रेट चाइना वॉल। 3000 साल से ज्यादा उन्होंने टाइम लगा दिया उस वॉल को बनाने के लिए। आप पेशेंस का आलम देखिए, और यही चीज़ है जो शायद भारत में मिसिंग है। हम तो कल की जो चीज़ मोदी जी ने 22 जनवरी को राम का मंदिर का इनॉग्रेशन किया, हम शायद भूल भी गए हैं। तब इतना हल्ला था, एक जश्न था, और अभी नोबडी टॉकिंग अबाउट इट। अभी हम कोई और ही बातें बोल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और चाइना कितना ज़्यादा फंडिंग कर रहा है सोशल मीडिया में नैरेटिव्स को बनाने के लिए। टारगेटेड नैरेटिव्स के बारे में सर ने जैसे बात किया, वो बना रहा है कि आपको भ्रमित करने के लिए, कैसे आपको अपनी ही गवर्नमेंट से, अपने ही लोगों से डिवाइड करना, दूर करना, और अपनी चीज़ को पास ऑन कर लेना। अभी जैसे इन्होंने एक और चीज़ बोली कि नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, वहाँ पर चाइना ने अपनी धाक बना ली है। उसका रीज़न है यही चीज़, सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने लोगों को भ्रमित किया। और मैंने इसके ऊपर 8-9 महीने पहले पूरा आर्टिकल बनाया था, मैंने उसके वीडियोस भी बनाई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी भेजा था मैंने, कि कैसे चाइना एक नैरेटिव्स को, एंटी इंडिया नैरेटिव्स को वहाँ पे
फैला रहा है। आपको आप देखिए, हमने शुरू से नेपालीज को भारत में आकर काम करते हुए देखा है, एक प्यार था, हमने कभी भी उनको उनको डिसट्रस्ट से नहीं देखा है। लेकिन आज नेपाली लोग यहीं पर काम करते हैं और हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। वाई? क्योंकि हर रोज उनके पास वो नैरेटिव्स आते हैं। इन चीज़ों से बचिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये चीज़ें हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है। अपने अकल लगाइए, जो लोग पैसे लेकर ऐसे नैरेटिव्स को फैलाते हैं उनसे दूर रहिए, तभी हम अपने देश को बचा सकते हैं और एक उज्जवल भारत, एक विकसित भारत की उम्मीद कर सकते हैं, जो मोदी जी हमें डेवलप करके देने की बात करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। मैंने बहुत छोटा टाइम लेना था आपसे, लेकिन आज तो नहीं, बात नाउ दैट बात शुरू हो गई तो खत्म हो नहीं रही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस। थैंक यू। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.